what he's trying to point out is, I ran 60 seconds at the Asian Games. It was a big disappointment, but that's in the past now. पास्ट इज पास्ट. खेलों में हमेशा नया दिन होता है और एक नई शुरुआत भी, और यही शुरुआत बहुत बढ़िया रही. स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि सुंकारी दिनेश आंध्र प्रदेश के टक्कर देंगे, लेकिन जो स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं जब तक फिनिश नहीं हो गई रेस. और रिजल्ट सबके सामने. मोहम्मद आरिफ, दिल्ली का ये खिलाड़ी 56.43 सेकंड के साथ इस हीट में पहले स्थान पर. And Mohammad Arif has taken his shoes off, trying to cool off, going for a, and he is standing right in front of the scoreboard. Okay, switching to outside the stadium, we have men's discus throw. That's F55 category, event number 58. We have a strong lineup of Manihas, Muthuraja, Sudhir from Delhi, Vedpal, Pappu Yadav, Neeraj Yadav, and that's Manihas from Haryana. Okay, switching on again. It's a long jump T64. That's Doga Dimadu Naidu. Even T36. That's men's long jump T64 event. डोगा डिमोडू नायडू आंध्र प्रदेश का ये खिलाड़ी, और ये देखना होगा 4.42 मीटर. बहुत बढ़िया शुरुआत रुपिंदर. Second attempt. So we'll be looking once again, like I thought in the previous one, they'll be looking to come close to 5 meters by the time they come to their sixth jump. Let's see them progress. जी हाँ, मीत पटेल आए हैं गुजरात के हाई जंप के लिए. And this is T64 event. Let me explain. और ये ह्यूज समर्थन मिल रहा है यहाँ. जो प्रयास है खिलाड़ियों का, जो मेहनत है, दर्शक दीर्घा में एक शोर सा उठा जैसे ही जंप कंप्लीट की मीत पटेल ने. एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है. 6 मीटर के आसपास का स्कोर रुपिंदर रहना चाहिए. My dream of 5 meters looks to be achieved by this boy from Gujarat. We're just waiting, and it's 5.70. So my dream is going to be surpassed. We'll be looking for 6 meters. जी हाँ, लगा था ऐसा कि बिल्कुल 6 मीटर के आसपास, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन. शुरुआत अच्छी है. निश्चित तौर पर जो आपका सपना है 6 मीटर का, वो भी कंप्लीट होगा. और अब ये अमित शर्मा हरियाणा के अपने प्रयास के लिए गए हैं. इस बार ये सक्सेस नहीं कहा जाएगा, शायद कुछ चूक हुई है उनसे, समझ नहीं पाए हैं. हालांकि फेयर दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस कुछ खास नहीं रहा. Watch out for Meet Patel, the one before. This boy who jumped 5.70 in his second attempt. ये अमित शर्मा आपकी स्क्रीन पर निराश होंगे अपने इस अटेम्प्ट से. जी हाँ, मात्र 3.65 मीटर, जबकि इससे पहले 5 को कवर कर चुके हैं. और अब ये आपकी स्क्रीन पर हैं प्रदीप हरियाणा के. बुलंद इरादे, बुलंद हौसले और हौसलों की उड़ान. खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023. Yesterday we saw a similarly interesting long jump where 4 people jumped above 6 meters. Are we going to see another brilliant here? Already Meet Patel has surprised us with 5.70 meters. इस बार 5 से निश्चित तौर पर ये ज्यादा है. कितना देखना होगा. बहुत बढ़िया ये शुरुआत थी.
स्टार्ट बेहतरीन, और देखा गया है उससे पहले के मुकाबलों में भी कि खिलाड़ी अपने जो प्रदर्शन है नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो जो पहला प्रयास था वो था 5.44 मीटर का, दूसरा उतना बेहतर नहीं, तीसरा फाउल हो गया है, और फाउल ऐसी स्थिति में तीसरे अटेम्प्ट में आना थोड़ा सा निराश करता है खिलाड़ी को। But he's already got a mark on, so obviously he was looking to improve on that. And when you try something like that, just like a pace bowler trying to improve his speed commits a no ball, this was a no jump. सोलाई राज तमिलनाडु के आपकी स्क्रीन पर तैयार, अपने ये ब्लेड एक जो लेग है इनकी ब्लेड के साथ ये क्या बेहतर होगा दीपक? So I was trying to explain that these are high jumpers with they have to work at maintaining an even stride in the run up, and they have either the absence of one limb, which we can very clearly see here, or they have an affected lower leg. And look at that courage with the blade. You get the kind of acceleration that you are hoping for, the explosive power that we talked about yesterday, Rupinder. It is all about that explosion. Use the good foot for the takeoff. So it is not barring that which foot you use. You have to use your good foot, and that's how you compete in this. And he's got 634 and 632 That's in massive. this attempt. And again, I just have to dream, and the athletes are responding. This is really great pleasure for us to look at such talent at the first India Khelo Paro Games. And that's Rajesh from Tamil Nadu, again a blade runner. Look at that confidence and that calm expression on the face. Oh, that's he's not very satisfied with that. यहाँ देखिए शुरुआत सभी हुए कदमों से की थी, लेकिन जो फिनिश देने में वो थोड़ी सी चूक हल्की सी हुई है, लेकिन अभी मौके और हैं, 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। तो आप जो एक गलती करते हैं, मात्र 4.98 मीटर की दूरी तय की है अपने दूसरे प्रयास में, और अब डोगा देमेंदु नायडू आंध्र प्रदेश का ये खिलाड़ी एक बार फिर अपने अटेम्प्ट के साथ तीसरे अटेम्प्ट में 6.22 था, और बेस्ट इनका है 6. ये डोगा देमेंदु नायडू आंध्र प्रदेश के। हर खिलाड़ी का अपना एक अंदाज होता है शुरुआत का, और ये डोगा का स्टाइल और क्या जबरदस्त, लेकिन 5 मीटर का भी जो आंकड़ा है वो पूरा नहीं कर पाए, उसको निराश होंगे। शुरुआत थी सधे हुए कदमों से, लेकिन शायद कुछ चूक हुई समझने में, और फिनिश उतना बढ़िया नहीं। रुपिंदर, बहुत ध्यान रखना होगा अगर इन खिलाड़ियों को मेडल की दौड़ में बने रहना है, तो 4.42 मीटर की दूरी अभी तक तय की है आंध्र प्रदेश के इस खिलाड़ी ने। इस मुकाबले में आंध्र प्रदेश के 3 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मीत पटेल एक बार फिर अपने Meet Patel looks very confident, tall boy from Gujarat, very accelerated pace. Oh, that's a really good jump, and that's a valid jump. And look at that acceleration from one foot. That's his good foot. And that was Rupinder, that was a very proper jump, I would say. Leg in the front, just landing like typically like a helicopter or an aeroplane. Absolutely. And we wish he's gone over 6, because Solai Raj is up there at 634, and this one is 575 from Meet Patel. So 590 remains his best. An interesting competition brewing, although Solai Raj clearly in front as yet.
And that's bib number 259, boy from Haryana, Amit Sharma. जी हाँ, इससे पहले 5.44 मीटर की दूरी ये तय कर चुके हैं। चाहेंगे इम्प्रूव करें, देखना दिलचस्प होगा क्या अपना जो पहले का प्रदर्शन था उससे इस अटैम्प्ट में सुधार पाएंगे। जी नहीं, लग नहीं रहा है ऐसा। मात्र 3.65 मीटर अपने इस दूसरे प्रयास में सफलतापूर्वक इन्होंने छलांग लगाई है, जो अपने पहले प्रयास से बहुत पीछे रह गए हैं हरियाणा के 400 मीटर T13 अमित शर्मा। और अब ये आपकी स्क्रीन पर इवेंट नंबर 17 प्रदीप 17 हरियाणा के। अपना समय ले रहे हैं, जानते हैं कोई जल्दबाजी नहीं, समय है तो उसका सदुपयोग किया जाए। बल्कि वार्म अप के लिए जाते हुए, क्योंकि बॉडी को पहले हीट करना होता है थोड़ा सा, और बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी है कि जो भी टेक्निक्स होती हैं खेल की उनको अपनाया जाए और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए प्रदीप हरियाणा के। खिली हुई धूप, हौसलों की उड़ान, दिल्ली का खूबसूरत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, 5 जंप का ये इवेंट, लॉन्ग जंप का ये इवेंट। आज हाई जंप का एक भी मुकाबला रुपिंदर देखने को हमें नहीं मिला है अभी तक। लॉन्ग जंप, डिस्कस, शॉर्ट पट और ट्रैक के मुकाबले, जैवलिन के मुकाबले देखे हैं हमने, लेकिन हाई जंप का आज कोई मुकाबला देखने को नहीं मिला है। और उसके बाद ये मेंस 400 मीटर रन T13 की तैयारी चलते हुए। So men's 400 meter run T13, the lineup is ready. We can see at least 6 players getting ready out of a line of 8, including Subodh, Vikas Gowda, Ashish Anvil, Prashant, Sunil Suthar. That's on your screen. That was player from Andhra Pradesh. That's bib 389, Vikas Gowda from Karnataka. You can see the players are, that's bib number 267. That's Ashish from Haryana. And T13 category, they can see up to a distance. It is not as severe as T11 or T12. That's bib number 346. Anvil Kumar from Himachal Pradesh. As you rightly said, T13, the impairment is slightly reduced in the sense as comparison to T11, which had to run with an escort runner, and we could have only 4 runners. We have directly now more than about 6-7 runners here in this race because there is no fear of an accident. So that's the lineup. Subodh, Raman. जी हाँ, लेन नंबर 1 में है सुबोध भट्ट हरियाणा के, लेन नंबर 2 में नैलरामन आंध्र प्रदेश के, लेन नंबर 3 में विकास गौड़ा कर्नाटका के, आशीष लेन नंबर 4 में हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के, अनिल कुमार लेन नंबर 5 में, लेन नंबर 6 में है अहमद SK वेस्ट बंगाल के, और लेन नंबर 7 में के प्रशांत तमिलनाडु के। Avnil Kumar, representing Himachal Pradesh, is a local runner in the sense that he is based in Delhi, trains in Delhi here at the Nehru Stadium, and perhaps would fancy his chances in this race.
So there. Which player did you talk about? Avnil Kumar, Avnil Kumar. Himachal Pradesh. So that's Avnil Kumar right at the front. You see the players sitting on the milestones on their respective seats, waiting for the A pistol to blow off. And because it is T13, you do not need a guide. You can have least obstruction, the players intruding into each other's lanes, and which is why we can have up to 8 athletes on the same track. And I think the more are the players, Rupinder, the more is the excitement in the audience as well, right? Definitely. And viewers watching the gun is linked to the electronic timing. So as soon as the gun goes, the timing starts. Earlier it used to be manual, and there is a difference of about 0.3 seconds between these two forms of timing. The one lap race, where the problem with everyone is how fast should I go in that first 200? Will I tie up in knots in the last 200? We see Avnil in lane 5 getting into the lead at the early stages, but it's still half a lap to go for this one lapper, which Milkha Singh made famous in 1960 at the Rome Olympics while finishing 4th for India. And that's Avnil Kumar pacing far ahead. Boy from Himachal Pradesh. Looks like, so far he's the clear winner in 400 T13. And other pacers are coming up. They're just, trying to close in inch. It's a very close fight. And that's what I was mentioning. Subodh Bhatt from lane 1 had all the energy in him, but he didn't pace himself on in the first 200, left too big a gap to cover. Otherwise, I suspect he could have won this race. Watch him coming from nearly 7 meters behind and finishing just half a meter behind Avnil. जी हाँ, अवनील कुमार हिमाचल प्रदेश के पहला स्थान 56.76 सेकंड के साथ। सुबोध भट्ट हरियाणा के 57.04, आशीष हरियाणा के 59.18 सेकंड के साथ इस रेस को कंप्लीट किया है। मेंस 400 मीटर रन T13 का ये मुकाबला, और टॉप पर अवनील कुमार हिमाचल प्रदेश के, 2 खिलाड़ी हरियाणा के, पहला मतलब दूसरा और तीसरा स्थान शेयर किया है हरियाणा। So Avnil Kumar, quite elated from Himachal Pradesh, getting congratulated by his peer, and that's the kind of sportsmanship I think that we should witness. Getting congratulated by the other players. And here you see it was a very tough competition between Avnil and Subodh Bhatt from Haryana. And you see Subodh clenching his teeth. He knows that he could have got it, but he left too big a gap to be covered. And Avnil, oh my God, he's exhausted, but at the same time, satisfied. One exhausted, the other one full of energy, not properly paced in his race. The other gets the advantage, and the exhausted man wins. जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है अनिल कुमार ने हिमाचल प्रदेश के 56.76 सेकंड के साथ कंप्लीट किया इस रेस को, सुबोध भट्ट। और अब ये शॉर्टपुट के मुकाबले F54 फाइनल है, ये मेडल का मुकाबला है। तो खिलाड़ी चाहेंगे कि जो दमखम है उसका प्रदर्शन किया जाए और बेहतरीन से बेहतरीन
अटेम्प्ट। ये सुवर्णा राज है उत्तर प्रदेश की। बेस्ट अभी तक का 4.44 मीटर का स्कोर जो आया था तीसरे अटेम्प्ट में। अर्चना कुमारी बिहार की, सिंह रानी गुजरात की। So that's Suvarna Raj, woman with 90% disability from Uttar Pradesh, and represented India in 3 Para-Asian Games in Hangzhou, China, in Jakarta in 2018, Indonesia, and South Korea in 2014, born in Nagpur. And very interestingly, she has audited more than 500 government buildings and sites across the country as part of the Accessible India campaign. So she's not only an athlete, but she's also someone who is actively participating towards inclusion in the society at large. 4.44, her best attempt, looking very confident. Member of World Assembly of Women with Disabilities in South Korea, and CSO member, Election Commission of India. We have such a talent which is participating in the games. Good to see one athlete serving selflessly the cause of the entire group of para people looking for accessibility, as you rightly pointed out, in so many government buildings where they face difficulties. जो बेस्ट रहा है वो है 4.44 मीटर के साथ 6 अटेम्प्ट भी पूरे किए सुवर्णा राज ने। और इनकी टक्कर है अर्चना कुमारी बिहार की और सिंपी रानी गुजरात की, पूजा हरियाणा की। 4 खिलाड़ी शॉटपट F54 कैटेगरी में मेडल के लिए अपने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ मौजूद। और अब ये एक बार फिर लॉन्ग जंप। राजेश कुमार तमिलनाडु के। प्लेट एक पैर में जो निचला हिस्सा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अपने हाथों को खोलते हुए बॉडी मूवमेंट जो होता है, एक्शन जो होता है, वो आपके प्रदर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजेश कुमार तमिलनाडु। सोलाई राज डी भी तमिलनाडु के हैं, इसी मुकाबले में हैं और 6.34 मीटर के साथ बढ़िया प्रदर्शन अब तक कर चुके हैं। कोशिश रहेगी राजेश कुमार की कि अपने जो अभी तक इनका जो बेस्ट है वो है 4.98 मीटर। So that's T64 for high jumpers with available movement, moderately affected in one lower leg or the absence of one leg. And they need to use their good foot for the takeoff. So that's a good long jump. और अब आपके स्प्रिंट पर प्रदीप हरियाणा के भी 2 खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं, अमित शर्मा और प्रदीप। और प्रदीप क्या कुछ हरियाणा के लिए कर पाएंगे, देखना इंपॉर्टेंट। अमित शर्मा इससे पहले
5.44 के स्कोर के साथ थोड़ा सा खासा प्रभावित किया था, लेकिन 6 की रेस में जब तक आप नहीं आते हैं तो मेडल की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम ही रहती है। अगर आपको मेडल चाहिए तो 6 का जो माइलस्टोन है वो आपको संभालना होगा, कंप्लीट उसे करना होगा। इस बार ये बढ़िया स्टार्ट है, लेकिन 6 तो किसी भी कीमत पर। 5 से आप कितना आगे निकले हैं सिर्फ यही देखना बाकी है। कोशिश अच्छी थी, तो मूवमेंट बढ़िया था, कॉन्फिडेंस भी नजर आया, लेकिन प्रदर्शन इस काबिल नहीं कि आप 6 का जो मीटर का जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करें। शायद सलाह मशवरा, जी हाँ, 5.36 मीटर की दूरी तय की। मीत पटेल गुजरात के 5.90। अभी तक हमने देखा था उन्होंने पूरा क्या था डिस्टेंस, इस बार बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी। ये स्पीड अच्छी है, क्या कवर करेंगे, 6 कंप्लीट करेंगे, 6। ये फाउल करार दिया गया है। निश्चित तौर पर थोड़ा सा संभल कर खेलना होता है, यहाँ चूक हुई है हल्की सी, शायद पहले उन्होंने स्टार्ट ले लिया। I think it's the pressure of Solai Raj. He's jumped 6:32, and Meet Patel was second at 5.90. This was his last attempt, so he was trying his level best, and in that attempt overstepped and could not get a mark, and will have to be content with the silver medal. Solai Raj has been excellent with his blade leg. And yes, Rupinder, one thing to note is that, with the Blade Runner, with the Blade Runners, whether that's in the sprinting event or in a long jump, you definitely get somehow that acceleration, which is slightly different from the other athletes in the same category. Do you think that the acceleration or the explosion that you get from the blade, that's slightly different? Because according to the IPC regulations, it should not be. But what's your experience? Well, technically, there was a huge debate about this when that famous Blade Runner, the Paralympic gold medalist Oscar Pistorius, competed with the able-bodied and reached the semi-finals of the 400 meters individual, and also won a medal for South Africa in the 4 into 400 relay. And many of the able-bodied athletes said he has an advantage because he's not gathering any lactic acid in his muscles as he runs towards the finish of the 400, while we are having to face that problem. So it's debatable, although I would think it is a very courageous effort on the part of these people with reduced mobility. And definitely, there is, and that's Solai Raj. That's the final result. Solai Raj, a big difference of 6.34 meter in long jump T64 men's event. Meet Patel 5.95, trailing behind, and then Pradeep of Haryana 5.44. And Rupinder, that twitch that you get from the hamstring versus the twitch that you get from the metal blade, it's debatable, but that's allowed in Absolutely. the It is event. within his rights, and they can continue to debate and continue to participate in peace. As we see that Meet Patel came second with 5.95. We had a similar boy from Gujarat who was fourth yesterday in the long jump, Muhammad Anas. I found it outstanding. He jumped 6.04. So something Gujarat is doing right with their long jumping coach and coming up with these two fabulous performers that really impressed me. And look at that. That school kids have been brought here to witness the fabulous event of the first ever Khelo India Para Games.
And somehow, somewhere, some of these kids, they will grow up, they will have this memory of witnessing this first event in India. And maybe, some of them will get interested, will get encouraged by their parents, by their teachers to participate in sports. Definitely. Very pleasing sight to see these young children coming, watching, and hopefully getting inspired. As we switch to a field event in the men's category. And you see that, look at the volunteers, the way they are helping the para athletes. It's very encouraging. They are escorting them, bringing their tools and their gear, helping with their mobility. And that's men's discus throw, F55. That's Manihas, Muthuraja, Sudhir, Vedpal, Amit Kumar Singh, Neeraj Yadav, and Pappu Yadav. And these are the highlights from the earlier sprint. T13, 400 meter. And what a scene. And this is Anil Kumar from Himachal Pradesh. T13. That's a classic finish. Avnil had the courage to go out fast. He's dying, but he's paced himself beautifully to win the gold. The boy in the first lane did not have the courage, went off slowly. In the last stretch, realized I might get a gold and just missed out. So that's a classic decision that a 400-meter runner has to make when he starts his race. जी हाँ, विमेंस शॉटपुट F54 कैटेगरी में सिंपी रानी गुजरात की तैयार हैं अपने अटेम्प्ट के लिए. वेट क्या है उसका शॉटपुट का? इसमें वेट क्या है? शॉटपुट का वेट क्या है? चेक करो. दो से 3 किलो. Bib number 205, Simpi Rani from Gujarat. All the players in women's shot put F54. They're going to throw a metal ball weighing about 2 to 3 kgs. Because it is F54, it is for field athletes with movement affected to a high degree in the mid-trunk, below the chest and legs, and all through while seated, and generate power through a full range of arm. They can extend the arm, shoulder, and chest movement. And you see, they need to generate that explosive power. They can hold a pole to balance them out. And Rupinder, we were talking about it yesterday. Some players, choose not to use the pole to balance them, and rather they bend backwards and use their back muscles as a fulcrum, which I think, and I think from an injury and from a safety perspective, this is a better approach. And in her second attempt, she is slightly better than the first one. A total of 6 attempts. जी हाँ, अभी तक 3.86 मीटर की दूरी तय कर चुकी हैं सिंपी रानी. उससे पहले स्वर्ण राज हमने देखा था क्या बेहतरीन प्रदर्शन. रुपिंदर 4.44 मीटर वो अचीव करने में सफल रही थी. 3 किलो के वेट को अपने एक बाजू से थ्रो करना आसान बिल्कुल नहीं होता है. टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, प्रैक्टिस बहुत. और ये
guest. खूबसूरत ईगल. That's our airy guest who has come to witness this grand event that was inside the Jawaharlal Nehru Stadium, the field event. This women's shot put event is happening just right outside. And in the meantime, we have the men's 400 meter T20 run up getting ready. We'll take you inside that event shortly. That's also going to be another exciting event. We can already see about 5 players getting ready for their turn. Simpirani prepping up. Sometimes the audience, they get a little impatient that why isn't it getting started? But I think we should be conscious of the fact that it's not a simple event. It's the players, they need to take care of their safety, and which is why it takes a little bit of extra time to get them ready for the throw. That's a valid event. That's a valid attempt. And you see the calm and the serenness on her face. Taking breath in. Rupinder, if you could tell us the purpose behind, when it comes to shot put, there is this very typical gesture or typical action of keeping the metal ball right against your ear, your cheek, and then, throwing it. What's the ergonomics there, if you could guide the viewers? Basically, the closer you keep it towards your neck, you release it straight and you get the maximum distance. The moment it goes further away, then it makes it that much more difficult in terms of power imparted. So you might have to impart more power, yet get less distance. And that's absolutely right. This kind of analysis can only come from a coach, Rupinder. Yes, you are right. So it's all about, we have to keep in mind it's about 2 to 3 kgs. You can't just, fling it just like that. There has to be a completely synchronous movement between the wrist and the shoulder, and which is why the players, they are expected to punch it out. So Simpirani 3.92 in her last attempt. Her second attempt was 3.86. The last one is 3.92. जी हाँ, जैसा पहले भी हम देख चुके हैं कि पहले अटेम्प्ट के बाद लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है रुपिंदर. ऐसा लगता है स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट है वो एज ए वार्म अप यूज कर रहे हैं प्लेयर. अगर इससे पहले ये वार्म अप का जो सिलसिला है शुरू हो जाए इवेंट में आने से पहले ही, तो प्रदर्शन निश्चित तौर पर यहाँ सुधार बेटर हो सकता है. लेकिन फिलहाल अभी जो 6th अटेम्प्ट है उसमें बेस्ट देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों का, और यहाँ सिंपिरानी का जो बेस्ट है वो है 3.92 मीटर. 4 खिलाड़ी इस मुकाबले में हैं. 94 इवेंट वुमेन्स शॉटपट F54 कैटेगरी. अर्चना कुमारी बिहार की, सिंपिरानी गुजरात की, पूजा हरियाणा की और सुवर्णा राज उत्तर प्रदेश की. शॉटपट का ये मुकाबला है. Men's discus special.
Men's discus F55 bishop. Men's discus throw F55 मुथुराजा 32.84 मीटर मनिहास हरियाणा के डिस्कस थ्रो जैवलिन शॉट पुट ये जो स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इससे बाहर जो फील्ड है यहाँ पर इनका आयोजित किया गया है और ये डिस्कस थ्रो And in the same event, we have an extremely celebrated player in the lineup, Neeraj Yadav, F55, men's discus throw. And just to refresh the memory, Neeraj Yadav participated in the recently concluded Asian Para Games. He claimed that India overall claimed a double podium finish in the men's javelin throw F55 and there Neeraj Yadav competed in the javelin event, but we have seen that it's a throw event, so players, they decide to go for the double, or maybe sometimes even triple events, where they combine javelin with either shot put or javelin with something else. And Tekchand in the same category, he took home a bronze medal, 30.36 meter. But back on the field. बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत शानदार तरीके से इसको अब देख रहा होगा। देखिए कॉन्फिडेंस बताता है खिलाड़ी का, इतना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर अपने इस प्रयास से प्रसन्न होंगे वेदपाल हरियाणा के 31.78 मीटर। और अब जाएंगे अपने अगले अटेम्प्ट के लिए। बहुत बढ़िया अभी तक, ये देखिए शानदार, टेक्निक अच्छी होती है तो रिजल्ट भी अच्छा होता है। और यहाँ टेक्निक और पावर दोनों का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा के वेदपाल, a very, very strong contender, powerful athlete. And you can see the kind of energy he's putting in the attempt. It's almost like a roar. So when I was there at the Paralympic trials back in 2021, I was witnessing the discus and the shot put events myself, standing right adjacent to where this event is happening right now. And it is absolutely thrilling to see the athletes, make that mark, make that attempt. That roar and the passion comes out and gives you a different kind of an energy, even as a bystander, Rupinder. And we could debate whether the roar actually helps them to push the discus further. Well, yes, that's a point. But you see the judo and the judo players, they make a lot of roar, especially I think roar and okay. So that's men's discus throw F55. The current standing is we have Vedpal trailing behind the first spot, which is currently Muthuraja 32.84, and three players, Amit Kumar Singh, Neeraj Yadav, they are not there. And back to Vedpal. So Rupinder, the importance of a roar, especially in power-led games, I think it does play a major role. Well, it definitely has something to do with each one individually psyching themselves up. We see it in badminton, Carolina Marin of Spain. Now Sindhu also following. On the tennis court with Novak Djokovic, if he's won a very long rally,
He just wants himself to roar as well as the spectators to roar. And um, and talking about Carolina Marin, she um, you know some players have actually complained that she roars too much. And I think there was some debate, some sort of an argument in one of these matches. Um, but that constant roaring is part of any power led game, right? Whether that's a discus throw, whether that's a shot put, even javelin has I witnessed Sumit Antil and other players right here at the Jawaharlal Nehru Stadium, um, and let me tell you, if you are watching them on the ground for a moment, you will feel that you got to be there out in the field yourself. So I think it does play a very, very important role in these kind of explosive games. And there we have Vedpal going for it. So Vedpal trying to chase down that 32.84 mark of Muthuraja, which has placed him in that gold medal winning position. He's roaring himself. Can he roar himself to a gold, or will he have to be satisfied with a silver? That's what we are waiting and watching. जी हाँ, बिल्कुल। एक जैसे शेर दहाड़ता है, ऐसे एक दहाड़ देता है खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को प्रेशर में लाने के लिए। अक्सर टेनिस कोर्ट में हमने देखा है, बैडमिंटन कोर्ट में हमने देखा है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं रुपिंदर। और निश्चित तौर पर यहाँ भी वही कि देखिए, दमखम हमारे अंदर भी है और वही बेहतरीन प्रदर्शन वेदपाल का कंटिन्यू है। लेकिन क्या गोल्ड मेडल की जो दावेदारी है उसको कुछ हिला पाएंगे अभी तक? ये बढ़िया थ्रो 32 मीटर से ज्यादा का आपको स्कोर करना होगा, डिस्टेंस कवर करना होगा अगर आपको चाहिए गोल्ड मेडल। बढ़िया थ्रो है। देखिए एक बार बेहतरीन नजारा, अपनी शक्ति को समेटते हुए उसको दिशा देते हुए हरियाणा के वेदपाल। इंतजार 32.08 Crossed the 32 barrier, but still missing the gold medal by 76 centimeters because Muthuraja has 32.84. जी हाँ, मेडल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये गोल्ड नहीं अचीव कर पाए हैं, लेकिन 32 के मीटर के जो आंकड़े हैं उसको छू पाए हैं, निश्चित तौर पर संतुष्ट होंगे अपने प्रदर्शन से। जो अब तक प्रयास किए थे वो 31-30, लेकिन अब ये 32 फाइनली। और खिलाड़ी के अंदर आत्मविश्वास निश्चित तौर पर जगाता है उसका बेहतरीन प्रदर्शन, और वही किया है यहाँ हरियाणा के वेदपाल ने। शानदार प्रदर्शन, 32.08 मीटर की दूरी तय करने में यहाँ कामयाबी हासिल की है। पैरा गेम्स का अट्रैक्शन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज लोग इन खेलों को देखने के लिए यहाँ स्टेडियम में आए हैं रुपिंद्र। और जैसे जैसे पता चलेगा लोगों को कि हाँ इतना बड़ा इवेंट राजधानी दिल्ली में उनके घर के पास चल रहा है, तो निश्चित तौर पर और खिलाड़ी को भी मजा आता है जब वो दर्शकों के बीच में अपने प्रदर्शन को करता है। एक जोश मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है। डेफिनेटली मोमेंटम मिलता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में वो 1 लाख का मोमेंटम भी भारत को वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरी टीम उससे ज्यादा डिटर्मिन्ड और कैलकुलेटेड थी। फिलहाल यहाँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी अंकुर धामा के 5000 मीटर्स की, जो आज सुबह हुआ था। अंकुर धामा ने ये दूसरा गोल्ड मेडल जीता था।
जी हाँ, अंकुर धामा 17 मिनट 53.85। ये थर्ड जो है, ये पोजीशन थी केशव मूर्ति के पास। और ये दूसरा जो थर्ड पोजीशन थी केशव मूर्ति 19 मिनट 39.58 सेकंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था भीमप्पा पुजारी ने कर्नाटका के। दूसरा और तीसरा दोनों जो स्थान थे वो थे कर्नाटका के खिलाड़ियों के पास। भीमप्पा पुजारी दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है 23 मिनट 34.13 सेकंड के साथ। और अब recognition also being given to the escort runners. Both of them are presented with medals. जी हाँ बिल्कुल, और हमने देखा था ट्रैक पर बिग नंबर भी वही दिया गया था गाइड्स को, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये प्रथम स्थान अंकुर धामा, बिल्कुल जो बीच में रहते हैं सबसे पोडियम फिनिश अगर आपको करना होता है, सबसे ज्यादा हाइट पर अगर आपको खड़ा होना होता है तो आपको हासिल करना होता है पहला स्थान। और पहला स्थान 5000 मीटर रन T11 में हासिल किया है अंकुर धामा ने मात्र 17 मिनट 53.85 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और ये वो क्षण है जो यादगार बन जाते हैं। आपने गोल्ड जीता, मैंने सिल्वर, इन्होंने ब्रोंज, लेकिन ये जो इस याद है ये एक साथ खिलाड़ियों को खड़ा कर देती है। जी हाँ, हम एक ही फील्ड के खिलाड़ी हैं और हमारा एम एक है, और विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ अंकुर धामा का। भीमप्पा पुजारी, केशव मूर्ति, ये वो सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल में परिणित किया अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयास को, अपनी मेहनत को। और अब ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल गले की शोभा बनते हुए अंकुर धामा, भीमप्पा पुजारी और केशव मूर्ति के गले की। और खेलों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्थानीय स्कूलों के बच्चों को यहाँ लाया गया है रुपिंदर, ताकि खेलों में दिलचस्पी बढ़े। और खेलो इंडिया का जो उद्देश्य था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन यही कि देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तलाश किया जाए, फिर उन्हें तराशा जाए और इस काबिल बनाया जाए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती को वो पेश कर सके। और फिर ऐसे यंग चिल्ड्रन अगर आए एज स्पेक्टेटर्स, वो इंस्पायर हो जाएं अगले जनरेशन के लिए। जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कल इनॉग्रेशन सेरेमनी में कहा था, अभी तो हम 111 मेडल लेके आए हैं, पर 2030 में हम 200 चाहते हैं। So Khelo India Para Games, the first ever being organized at Jawaharlal Nehru Stadium. And now we see women's long jump, T20, T37, T38 category combined. And we have number 252, that's Sita from Haryana. 86. Sita is from T37 category. We have one player, Pooja, from T20 category, but it's a mixed category in long jump, 37, 38, and 20. We have three players, Sita, Chiranjita, and Bina. Bina from Gujarat, Chiranjita from Assam, and Sita from Haryana, all in T37 category. We have Anismita of Assam,
the solo player in T38 category. That's bib number 129, Anismita, the only one in this event with T38 category. And look at that, young player. I think it's, Rupinder, I think it's really important, this early exposure. It's not about whether you win or you lose. It's about, getting that exposure. And it's really heartening to see that through this Khelo India, it's a movement which translates to Let's Play India. It was proposed by the government of India in 2017 to revive India's sporting culture by engaging children at the grassroots level. That's Bina Mordia 198 bib number from Gujarat, going for it. Good attempt. Let's see whether that's legal. That's a legal attempt. One can make out its initial stages of their taking part in these events. The first girl jumped bare feet. This girl is also jumping in normal shoes. Normally you would use spikes. So it's a learning process, and they're going to come back with benefits from this exposure. जी हाँ, बीना मोरदिया ने कवर किया 3.08 मीटर की दूरी को। पहला ये प्रयास था, और जैसे जैसे प्रयास आगे बढ़ेंगे इसमें सुधार होता चला जाएगा बेहतर। One very important categorization point, that's Puja 244. The T20 long jumpers, it's an intellectual impairment. It's different from visual impairment or any impairment in the limb. It's intellectual impairment. They have difficulty retaining competition information, which affects their ability to alter techniques or tactics. And even then, these players, if they are competing, that's bib 244 Puja. That's exactly T20 category. She has intellectual impairment, difficulty in retaining competition information, very, very minute details like where she needs to jump, how much, the techniques and the tactics. And we can appreciate, I think we as viewers, we should appreciate the effort that it takes for a T20 player to participate. And also, the coach needs to know all these details before he tries to coach them, because it requires a huge amount of patience. It's not going to come overnight. It will have to be drilled in over and over again. Perhaps with a normal jumper, you tell them 5 times. With them, you have to probably say 50 times before they achieve it. But they achieve it. And it's quite interesting that T20 is an intellectual impairment, while for T37 and T38, that's an impairment of the lower trunk and legs down one side of the whole body. And in all the 3 cases, we see that the jumping, the coordination of the body, that is affected, and which is why T20, 37 and 38 by the IPC, they can be clubbed together. And that's bib 129, the only player, Anismita Konwar from T38 in long jump from Assam. And T38 is a competition class, will be a competition class at the Paris 2024 Paralympics as well. So perfectly valid mixture of participants. Their ability to anticipate the takeoff can also be affected. So they don't know from where sometimes they need to jump off. So Anismita facing the problem of jumping from far behind. Just watch her take off well behind the board, which is technically permitted, and therefore not getting the jump. And we hope she's learning in each jump that she's doing and coming closer and closer to the board and getting a better mark for herself. And that's exactly what this impairment does.
specifically T38, which is what Anismita plays in. And you see, it is so heartening. All the players, sitting together, talking to each other. It doesn't look like a competition any longer. It looks like camaraderie, that teamwork, that we are together as one nation. And that's what these games teach us. That's bib number 198, Veena Mordia from Gujarat. ने कदमों से शुरुआत की और ये स्टार्ट किया। कोशिश यही कि अपने जो प्रदर्शन है उसमें सुधार किया जाए। वीना मोदिया गुजरात पहले प्रयास में 3.08 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया था, जो बेस्ट है। वही अगर सीता की बात करें तो अब पूजा आपके इस फील्ड पर हरियाणा की। कोशिश यही है खिलाड़ियों की कि यहाँ से जितना मैक्सिमम सीख सकते हैं सीखें, और ये पहले के मुकाबले बेहतर प्रयास आ जाएगा। 4 मीटर की जो दूरी है वो अब से बढ़ते हुए लग रही है। देखना होगा फाइनल में। जी, ये डिस्क्वालीफाई किया गया है अटेम्प्ट को, ये अटेम्प्ट फेल कर दिया गया है। ये शायद ठीक से कर नहीं पाई। अभी तक का बेस्ट जो पहले प्रयास में किया था वो 3.56 मीटर। ये जो चीज देखिए, ये पहले जो स्टार्ट था उसपे लाइन जब हिट कर देते हैं पैर को तो वो वैलिड करार नहीं दिया जाता। वो पाउडर इसीलिए डाला जाता है कि आप उस पर पैर करें तो पता चल जाए आपको। और ये अब सीता हरियाणा की बेस्ट के लिए तलाश करती हुई, लगातार प्रयास करती हुई। अभी तक का बेस्ट आया है इनका दूसरे अटेम्प्ट में। 2.73 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है अभी तक। बहुत कुछ सीखना होगा रुपिंदर इन खिलाड़ियों को, अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपने जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन अगर करना है तो बहुत सुधार की आवश्यकता यहाँ इस इवेंट में। खासकर अनिश्मिता पवार असम की अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए तैयार। दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, क्या तीसरे में देखना होगा बेहतर करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करते हुए असम की अनिश्मिता पवार। लेकिन ये बॉर्डर का पैर तो पड़ा है, देखना होगा वैलिड है या नहीं। अभी ब्लैक स्कोर में अभी भी थोड़ा, जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड था। 3.43 मीटर की दूरी तय करने में कामयाब रही अपने तीसरे प्रयास में। So Anismita learning. He was far behind in the first attempt, came closer to the board in the second, then came bang on the board. A perfect jump. And from 2.73, she again jumped to 3.45. यहाँ बिना मोड़ दिया 3.08 पहले पूरा कर चुकी है, और अब इस प्रयास में देखना होगा कितने करीब पहुंची है अपने साथी जो हिंदी खिलाड़ी है उनके स्कोर के। 3.08 देख चुके हैं हम इससे पहले। क्या उसको क्रॉस किया है पहले ही डिस्टेंस को, या जी हाँ, पहला जो है वो बेस्ट है अभी तक इनका। अभी 2.96 दूसरे प्रयास में। तीसरा प्रयास इनका 2.87। पूजा आई है हरियाणा की। तीसरा प्रयास इनका
फेल था। अभी तक का बेस्ट पहले प्रयास में इन्होंने हासिल किया है 3.5 अच्छे देख रही हैं, समय ले रही हैं, जानती है 6 प्रयास के बेहतर के लिए कोशिश करेगी। हरियाणा की पूजा, हरियाणा की 2 खिलाड़ी इस मुकाबले में बनी हुई है। पूजा कैटेगरी है T20 और सीता T37, ये दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा से हैं। और ये सीता कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चेहरे पर झलकता हुआ, जैसे जैसे प्रयास आ रहे हैं खिलाड़ी को लग रहा है कि हाँ मैं बेहतर कर सकती हूँ। इस बार 2.22 मीटर की दूरी ये पहले तय कर चुकी है। यहाँ देखना दिलचस्प होगा। And she is jumping without shoes. Rupinder, what's your view on that as the coach? Well, definitely the next step is to put shoes, and the final step is to put spikes. So I guess that's how you identify a beginner, intermediate in terms of their career journey. Bina Mordia, T37. That's a valid attempt. And just a technical point here, Rupinder. Why is it a combination of white and red? White for legal and red for non-legal attempt? Why not simply green and red, like the way we see on a traffic signal? Well, that you can debate, but white probably signifies peace and everything is good, fair, and red, obviously, you have crossed the limits. So white is when it's a spotless attempt, and red is when you have some question, some hiccup. And that's why it's not a green and red, it's white and red flag. And we see Anismita. Oh, she fell on the back, not looking very happy. And that was almost a sprint slide. There was absolutely very less or no attempt to jump. She just came running in and took a higher stride. And that's 3.43, a better one. Her best one so far, 3.56. जी हाँ, एक बार फिर डिस्कस थ्रो का एक्शन कंटिन्यूज है आपके स्क्रीन पर। That's men's discus throw, F55, out in the field. And we see that this competition has been going on. There are multiple players. It takes time to strap them up onto their chair. And there are almost 5 players who are actively competing, although we have a list of 8 competitors, including Neeraj Yadav,
We saw Vedpal a while back. And right now we see bib number 137. That's Amit Kumar Singh from Bihar. And Rupinder, you see when the discus is thrown in such a way that it goes without shaking or without getting disturbance, I think that creates a better chance for it to go farther, because obviously the aerodynamics play their part, and it's going to be a seamless tear up of the air pocket, which basically means less disturbance for the discus. But what do you say? Absolutely. That's the perfect throw that they look for, to get that seamless release and no motion before it lands. So the lesser is the commotion in the discus, the better it is. And that's an aerial view, almost a satellite view, I guess. We see the shot put arena. We see the players gathering in, and we see the field. The periphery of the shot put, it opens up into the limited space, the limited arena, the market space within which the discus needs to land. जी हाँ, ड्रोन से इस शॉट को लिया जा रहा है. जो ड्रोन पहले स्टेडियम के अंदर था वो बाहर आ गया है. मैन डिस्कस थ्रो F55 कैटेगरी. खूबसूरत बेहतरीन मधुराजा 32.84 मीटर का डिस्टेंस करके कवर अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं. वेदपाल हरियाणा के 32.08 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर छलांग लगा चुके हैं, और मनी हास अब चले गए हैं तीसरे पर 30.88 मीटर के साथ. पर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि वेदपाल जो ट्राई करेंगे वो गोल्ड के लिए करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो दूसरे स्थान पर नजर आते हुए रुपिंद्र. लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है. क्या ये पिक्चर बदल भी सकती है? अभी दूसरा खिलाड़ी अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन कर दे तो वेदपाल, और जो चुनौती है फर्स्ट पोजीशन की, उसको भी अभी पक्का तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक आपका अटेम्प्ट और दूसरे खिलाड़ी के सपने चकनाचूर निश्चित तौर पर हो सकते हैं. Well, Muthu Raja is a celebrated player. He got congratulated by the Honorable Prime Minister, Mr. Modi, for securing a bronze medal in the recently concluded Asian Para Games. So he is an international player, and he has that experience, and that experience actually counts somewhere. So he's trailing at 32 plus, and we have seen Vedpal at 32, and that millimeter, that centimeter level difference, that definitely counts somewhere. So let's not forget he is an international level player. Definitely, that's going to count somewhere. But Vedpal is very strong. Still 32. जी हाँ, बिल्कुल. 32.84 मीटर को कवर करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट, और जब आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तभी आपको बेहतर परिणाम भी मिलते हैं, और परिणाम यहाँ फिलहाल मुथु राजा के पक्ष में पहले स्थान पर बने हुए हैं डिस्कस थ्रो F55 कैटेगरी के इस मुकाबले में. और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो फीता यूज किया जाता है उसको अब फोल्ड करते हुए Muthu Raja hails from Tirupur, came to Tirupur in search of a job at the age of 17.
He comes from a very, very humble family. Dropped out of school in class 9 due to financial issues. His father is a daily wage laborer, and he has 3 younger brothers. Worked in the printing section of a garment factory, and at the same year, he met with an accident and he ended up in a wheelchair. But look at the turn of events. He, after nearly 2 years of treatment, while he was getting treatment in the rehabilitation center, he identified his potential in the sport. ये इतना बढ़िया पर्सनल इसकी हिस्ट्री बताता था. उनकी ओबी की गई तो ओबी की गई होगी. रुपिंदर सर की बातें भूलने की नहीं थी. लाइव है सर. फेसबुक पे उसका है ना, यूट्यूब पे इसके लिए. बहुत दुनिया सर आज के जमाने में टीवी लोग नहीं देखते हैं, मैं नहीं देखता. आप मान लो कि यूट्यूब ही है. ये यूट्यूब पे टीडी स्पोर्ट्स कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा टीवी पे. हाँ. So we are live from Jawaharlal Nehru Stadium. ये बात बोलना मत करो, ये लाइट चली गई. सर आज इन्होंने कुछ ब्रेक भी नहीं लिखा हुआ. Now the players, they are going to be shifted to the chair. We are getting all the arrangements done by the volunteers. So Virender, Khelo India, which means let's play India. ये हमें दिख रहा है, वहाँ नहीं आ रहा. ये मुंह से लगा के ना, ये भी लाल. 5-6 घंटे से ज्यादा का होना चाहिए एक कमेंटेटर के लिए. जो स्टैमिना यही अलाउ करता है, मुझे लगता है. उसके बाद कल इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया था, आपको पता है. ये नहीं पता कब से बोल रहा है. इंसान